ناظرین السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں سیاسی ٹی وی۔ عالمی خبروں میں آپ سب کا استقبال ہے۔ میں محمد صدیق۔ سب سے پہلے سرخیوں پہ ایک نظر ڈالتے ہیں۔ ایران اور امریکہ کے درمیان کشیدگی میں اضافہ، ایران کے کویت بحرین پر میزائل حملے، امریکہ کی جوابی کارروائی۔ ایران کے ساتھ اب کسی نہ کسی طریقے سے معاہدہ کرنے کا وقت آ گیا ہے، ٹرمپ کا بیان۔ ہم نے سفارتکاری کے ذریعے ہند پاک جنگ ختم کرائی، ٹرمپ کے بعد مارکو روبیو بھی کریڈٹ لینے لگے۔ جموں کشمیر لداخ ہندوستان کے اٹوٹ حصے ہیں، وزارت خارجہ کا بیان۔ پاکستان اور یورپین یونین کے تبصرے پر سخت موقف اختیار کیا۔ شیئر مارکیٹ میں زلزلہ، سینسیکس نفٹی کی حالت خراب، آئی ٹی اسٹاک بھی ہوئے کریش۔ امریکہ کی ممتاز یونیورسٹی میں قرآن کی گونج، قرآن کریم کی تلاوت نے ماحول روح پرور بنا دیا۔ برطانوی بادشاہ چارلس سوم کے کینسر کے خلاف جاری جنگ کے دوران شہزادہ ولیم نے شاہی ذمہ داریاں سنبھال لیں، شاہ چارلس طبی معالجے کے بعد اپنی عوامی سرگرمیاں محدود کر رہے ہیں۔ ناظرین، یہ تھی سرخیاں، اب خبروں کی تفصیل پیش ہے۔ ایران اور امریکہ کے درمیان کشیدگی آج اچانک بڑھ گئی جب ایران نے کویت اور بحرین میں امریکی فوجی اثاثوں پر حملوں کی ذمہ داری قبول کر لی۔ ان حملوں میں امریکی 5th فلیٹ کے ہیڈ کوارٹرز، ایک ایئر بیس اور ہیلی کاپٹر شامل تھے۔ واشنگٹن نے دعویٰ کیا کہ اس نے ایران کی جانب سے داغے گئے میزائلوں کو روک کر جوابی کارروائی کی۔ ایران کی پاسداران انقلاب نے کہا کہ اس نے میزائل اور ڈرون حملے کیے تاکہ امریکی حملے کا جواب دیا جا سکے۔ ایرانی میڈیا نے مزید رپورٹ میں کہا کہ پاسداران انقلاب کی بحریہ نے ایک جہاز پانایا کو نشانہ بنایا، جس پر الزام تھا کہ امریکی افواج نے آبنائے ہرمز کے قریب ایک ایرانی آئل ٹینکر پر حملہ کیا تھا۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کا کہنا ہے کہ ایران کے ساتھ اب کسی نہ کسی طریقے سے معاہدہ کرنے کا وقت آ گیا ہے۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے سوشل میڈیا پر ایک بیان میں کہا کہ ایران اور امریکہ کے درمیان بات چیت رکنے کی خبریں غلط اور بے بنیاد ہیں۔ ایران سے گفتگو مسلسل جاری ہے، تاہم یہ بات چیت کس سمت جائے گی یہ کوئی نہیں جانتا۔ انہوں نے کہا کہ ایران سے کہا کہ وہ وقت آ گیا ہے کہ کسی نہ کسی طرح معاہدہ ہم کر لیں۔ امریکی صدر ٹرمپ کے 12 ہند پاک جنگ رکوانے کے تذکرے کے بعد اب امریکی وزیر خارجہ نے بھی اس معاملے کا کریڈٹ لے لیا ہے۔ مارکو روبیو نے سینٹ خارجہ کمیٹی کے سامنے پیشگی کے دوران کہا کہ ہم نے آذربائیجان اور آرمینیا کے درمیان امن معاہدہ کرایا۔ انہوں نے کہا کہ اس کے علاوہ دوسرا معاملہ ہندوستان اور پاکستان کا تھا، ہم نے وہ جنگ ختم کرائی اور اس میں ثالثی و سفارتی کوششوں کے ذریعے ہماری مدد شامل تھی۔ First, let me remind everybody that while I've not been before this committee since I believe February when we briefed on the Venezuela operation, I have appeared on multiple occasions here, both in my role as National Security Advisor and Secretary of State, in both all Senate briefings multiple times, Gang of 8 briefings, Gang of 16 briefings. So we've talked about this topic with some of you in those settings in the past that you've heard from us. Let me just lay the predicate here, okay? Iran's desire to build a nuclear weapon was going to be effectuated behind a conventional shield. They were going to build for themselves so many missiles, so many drones, so many conventional weapons, including a navy, that at that point there's nothing you could do about it. What they tried to do is they were going to try to build a conventional shield and hide behind that conventional shield and basically say to the world, if you come and do anything about our nuclear program, we will overwhelm you with missiles, we will overwhelm you with drones, and we will overwhelm you with our navy, and you will not win. You will not be able to do anything about it. They were seeking that point of immunity, which is why the president chose to act, to deny them that point of immunity. Operation Epic Fury, some of you didn't like it, some of you did. It was highly successful in achieving its military objectives, which is dramatically reducing the defense industrial base of Iran, the ability to build these missiles and to build these drones, especially the missiles program, substantially degraded. A substantial percentage, and I'll leave the exact numbers to the Department of War because I'm not a general and I'm not here to speak as a military planner, but a substantial degradation in the number of launchers that they have as well. They still have a lot of drones because these are easy to make. We all know it's not an Iran challenge. This is a global challenge. And it's playing out every single day around the world. I mean, Mexican cartels are using UAVs against each other.
We should imagine at some point may even use it against our interest. So this is a pervasive problem around the world. The economics of it are something we have to solve for. But nonetheless, even their drone building capability has been eroded. Today, there is no Iranian Navy. There is no such thing. There's a bunch of Boston whalers with machine guns on them, but there is no Navy. There is no Iranian Navy. It lies at the bottom of the ocean and will soon, within a number of years, be prime fishing spots because they'll turn into reefs. So my whole point is that the Iranian conventional shield has been substantially eroded. Now, in the aftermath of that, two things have happened. The first is they entered into a ceasefire. They agreed, we agreed to stop. But part of that agreement was that they would reopen the straits. बरतानवी बादशाह चार्ल्स III की कैंसर के खिलाफ जारी जंग के दौरान शहजादा विलियम ने शाही जिम्मेदारियां अहसन तरीके से संभाल लीं। बरतानवी मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक शाह चार्ल्स तिब्बी मुआलजे के बाद अपनी अवामी सरगर्मियां महदूद कर रहे हैं, जिसके बाद शहजादा विलियम अमली तौर पर शाही ख़ानदान के अहम फ़राइज़ अंजाम दे रहे हैं और बादशाहत के इस्तेहकाम को बरकरार रखने की कोशिश कर रहे हैं। 41 साला शहजादा विलियम इस वक्त न सिर्फ शाही जिम्मेदारियों में मसरूफ़ हैं बल्कि निजी सतह पर अपने ख़ानदान की भी देखभाल कर रहे हैं, जबकि मुबस्सिरीन उन्हें बरतानिया के शेड्यूल किंग करार देने लगे हैं। हिंदुस्तान ने पाकिस्तान और यूरोपियन यूनियन यानी EU के मुश्तरका बयान में जम्मू कश्मीर और लद्दाख के हवाले से किए गए तबसरे पर सख्त मौक़िफ़ इख्तियार किया है। इसे नापसंदीदा करार देते हुए सिरे से मुस्तरद कर दिया। वज़ारत ख़ारजा के तर्जुमान रणधीर जायसवाल ने हफ्तावार मीडिया ब्रीफिंग में इस सिलसिले में पूछे गए सवाल के जवाब में कहा कि मरकज़ के ज़ेर-इंतज़ाम इलाक़े जम्मू कश्मीर लद्दाख हिंदुस्तान के अटूट अंग हैं। ये हिंदुस्तान का अंदरूनी मामला है जिसका इस मामले से कोई लेना देना नहीं है। इसे इस तरह के तबसरे से गुरेज करना चाहिए। We would like to say that we categorically reject such unwarranted references in the joint press communique on matters internal to India. The Union territories of Jammu and Kashmir and Ladakh are integral and inalienable parts of India. Those who have no locus standi on such matters should desist from making any comment on them. Keshav, regarding your question, we have our companies, oil PSUs, who've made investments in the energy sector in Venezuela. And during this visit, as you know, Venezuela is an important energy partner for us. There'll be issues of regarding energy security, regarding our public sector undertakings, those issues, and several other trade and investment related issues. And other parts of this relationship, we have several elements to it: the healthcare cooperation, pharma cooperation, and as also there are several areas of business engagement that are proposed between the two sides. So all these issues will be discussed along with the issue that you mentioned. So Ishi, first to your question, as you know, that we have several rivers, in fact 54 rivers that are shared between India and Bangladesh, and we have a joint rivers commission, a structured bilateral mechanism to deal with issues pertaining to all the rivers that we share between India and Bangladesh. And the question that you asked, we will also be looking at these issues as part of our structured bilateral collaboration that we have on the issue of water, on the issue of rivers. Pranay, on your question, we also seen some reports about deportation. But what I can tell you is that India does not in any manner support illegal immigration. We in fact cooperate with the United States as and when there are cases of deportation which are referred to us. We check the nationality, and once the nationality of those people are verified, thereafter they are deported and we receive our nationals. As far as the exact number of cases that have been referred to us by the United States, I don't have an update to share with you at this point, but surely I will come back to you. But immigration matters, mobility matters, this is an ongoing collaboration, cooperation between the United States and India. And we have been having people being deported from the United States to India once their nationality has been verified by us. Megha, on the visit of the Foreign Minister of UK, this visit, I understand, is to happen,
As to when it will happen, we'll keep you informed. With the United Kingdom, it's not just about FTA, but we have a large gamut of issues that we deal with them. Economic cooperation, security cooperation, defense cooperation, and several other areas of collaboration. So when a foreign secretary or the foreign minister of UK will be here, we will discuss all these issues with them, as also including the issue of free trade agreement and how we can scale up our trade and investment ties. मगरबी एशिया में जारी तनाज़े के दरमियान शेयर मार्केट में आज एक बार फिर बड़ी गिरावट देखने को मिली है। सेंसेक्स, निफ्टी दोनों इंडेक्स अपने साबिक़ा बंद के मुकाबले में आज बुरी तरह फिसल कर खुले। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का 30 शेयरों वाला सेंसेक्स देखते ही देखते 800 पॉइंट से ज़्यादा का गोता लगा गया, तो वहीं नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का निफ्टी भी 200 पॉइंट से ज़्यादा की गिरावट के साथ कारोबार कर रहा था। इस दौरान IT शेयर जो गुज़िश्ता कारोबार दिन खलबली मचाए हुए थे, अचानक क्रैश हो गए। इसमें TCS से लेकर इन्फोसिस तक शामिल हैं। अमेरिका की मुमताज़ तालीमी दरसगाह हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के ग्रेजुएशन तकरीबात के दौरान एक रूह परवर मंजर ने दुनिया भर के लोगों के तवज्जो अपनी जानिब मबजूल कर ली। बेक्लावरेट तकरीब में मुस्लिम तालिबा सोहेला मुख्तार ने कुरान मजीद की तिलावत की सआदत हासिल की, जिसे हाज़रीन ने निहायत एहतराम से सुना। तकरीब में सूरह अलक़ की इब्तिदाई आयत की तिलावत की गई, जो इस्लाम में नाजिल होने वाली पहली वही का हिस्सा है। इन आयत का मरकज़ी पैगाम इल्म हासिल करना और पढ़ने की अहमियत को उजागर करना है, जिसके बाद एक आलमी तालीमी इदारे की तकरीब फरागत में इनकी गूंज को ख़ास मानवियत हासिल हुई। हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के तारीख़ी हॉल में मुनक़िदा इस तकरीब में मुख्तलिफ़ मज़ाहिब और सहाफ़तों की नुमाइंदगी की रिवायत को बरक़ा रखा गया। कुरान करीम की आयत अरबी ज़बान में तिलावत की गई, जबकि शुरका के लिए उनका अंग्रेज़ी मफ़हूम भी पेश किया गया। व्हाइट हाउस करेस्पॉन्डेंट एसोसिएशन WHCA की जानिब से रवां साल 25 अप्रैल को वाशिंगटन में एक इशाइया तकरीब डिनर पार्टी का इनेकाद अमल में होता था, लेकिन गोलाबारी की वजह से रखना अंदाजी पैदा हुई और प्रोग्राम मुलतवी कर दिया गया। अब खबरें सामने आ रही हैं कि आइंदा 24 जुलाई को इस अशया की तकरीब में अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की शिरकत होगी। ट्रंप ने खुद ट्रूथ सोशल पर इसकी जानकारी देते हुए कहा कि उन्हें इस तकरीब में शिरकत और खिताब करने की दावत दी गई है, जिसे इन्होंने कबूल भी कर लिया है। मुल्क भर से सयाह इन दिनों कश्मीर की जानिब रुख कर रहे हैं। उनका कहना है कि यहाँ उन्हें ठंडक मैसर है। मुख्तलिफ़ इलाक़ों से पहुँचने वाले सयाह कश्मीर के तमाम इलाक़ों की तारीफ़ करते नहीं थकते। सयाहों का कहना है कि हमें यहाँ आकर बड़ा सुकून नसीब हुआ है, इसलिए मुल्क के दूसरे शहरियों से भी सयाहों ने कश्मीर आने की अपील की है। यहाँ के मौसम की बात करें तो बहुत ही बढ़िया, एकदम खूबसूरत। मेरा तो ये फर्स्ट टाइम है यहाँ पे आने का। पुणे में आजकल तो काफ़ी 47 डिग्रीज टेम्परेचर चल रहा है, तो हाँ बहुत ही ज़्यादा है। तो यहाँ पे बहुत ही सुकून वाली फीलिंग आ रही है। जब भी टाइम मिले यहाँ का सफ़र ज़रूर करें। अच्छा लग रहा है, हम हर साल आते रहते हैं पहलगाम। इस बार भी आए, अभी पहली बार आए इस साल गर्मियों में, बाद में अभी जून जुलाई बाकी पड़ा, आएंगे बीच में। हवा कल आए थे वैसे, तो इधर ठंडी ठंडी हवा चल रही है। ये भी मेरी नानी है, ये भी आए हुए हैं। चेन्नई में तो, जैसे मैं चेन्नई में पढ़ता हूँ, वहाँ तो गर्मी बहुत है। जम्मू में भी 40 डिग्री तक चल रहा है टेम्परेचर। यहाँ है थोड़ा फ़र्क लग रहा है, ठंड महसूस हो रही है। हाँ शीतल जी, ये बताइए कि अभी पूरे मुल्क में जो है गर्मी, बहुत गर्मी, बहुत ज्यादा। जम्मू में इतनी गर्मी है, हम आपको बयान नहीं कर सकते, इतनी गर्मी है जम्मू में भी। यहाँ कश्मीर में तो जन्नत है। हम कल आए थे, इतनी ठंड थी कि हमें यहाँ जैकेट्स वेयर करनी पड़ी। अच्छा। हाँ, ब्लैंकेट्स लेने पड़े। सुबह हमने गर्म पानी से नहाया है, इतना अच्छा मौसम है यहाँ पे। अच्छा मौसम है। हाँ। तो पहलगाम तो वैसे भी, पहलगाम और सोनामर्ग मेरी फेवरेट स्पॉट है। हाँ। हम तो हर साल पहलगाम और यहाँ पे आते हैं। नाज़रीन, आखिर में सुर्खियों पे कौन है। ईरान और अमेरिका के दरमियान कशीदगी में इजाफा। ईरान के कुवैत, बहरीन पर मिसाइल हमले, अमेरिका की जवाबी कार्रवाई। ईरान के साथ अब किसी न किसी तरीके से मुआहदा करने का वक्त आ गया है, ट्रंप का बयान। हमने सिफारतकारी के जरिए हिंद पाक जंग खत्म कराई। ट्रंप के बाद मार्को रूबियो भी क्रेडिट लेने लगे। जम्मू कश्मीर, लद्दाख हिंदुस्तान के अटूट हिस्से हैं, वज़ारत ख़ारजा का बयान। पाकिस्तान और यूरोपियन यूनियन के तबसरे पर सख्त मौक़िफ़ इख्तियार किया। शेयर मार्केट में ज़लज़ला, सेंसेक्स, निफ्टी की हालत खराब, IT स्टॉक भी हुए क्रैश।
امریکہ کی ممتاز یونیورسٹی میں قرآن کی گونج، قرآن کریم کی تلاوت نے ماحول روح پرور بنا دیا۔ برطانوی بادشاہ چارلس سوم کے کینسر کے خلاف جاری جنگ کے دوران شہزادہ ولیم نے شاہی ذمہ داریاں سنبھال لیں۔ شاہ چارلس طبی معالجے کے بعد اپنی عوامی سرگرمیاں محدود کر رہے ہیں۔ ناظرین، اسی کے ساتھ ہی عالمی خبرنامہ ختم ہوتا ہے۔ مجھے اور ساری سیاست کی ٹیم کو اجازت دیں۔ اللہ حافظ۔